welcome to one more episode of the KF Beyond Classroom. Today I have siblings with me. They are poles apart. One is very dedicated. She wants to change her scores and she did. And one who is like, ho jayega. So here we have Kanishka Gole and Shivang Gole. Kanishka was from my first batch, and I still remember Kanishka, when we spoke, when we met, when we started classes, you were very consistent that I want to do this for myself, I want to score 90% up, and that was your initial goal. And there were, of course, in your batch, there were people who were already settled and they were above 90, and there was always this feeling that Mulukar to hai, matlab. I knew that other people are, we can say nerds, scholars, but you were the one who was maybe we can say above average, but always wanted to do something new, wanted to change. So you tell me, how was that experience being in a classroom filled with scholars, filled with competition, and what did you feel initially when you started? Well, I didn't actually I looked up to them because they were always ahead of me. So I considered them as my competitors more or less, and then, I believed in the process and not the goal. I was like, abhi 10th karna hi hai, to let's do it with whatever you have. Yes. So you are a person who believes in the process rather than the end goal. Yeah. But I remember you used to tell me, मेरे को 90 plus जाना है, मेरे को वो तो करना है, right? But then वो goal धीरे-धीरे change होते गया, वो ऊपर बढ़ने लगा, and to be very specific, I think you started with 85 percentage and you have got 97.3%. So you left those toppers and scholars behind and you've gone ahead, and I'm so proud of you. And you were my first batch topper. So that feeling, that mentorship that I've given you, that will always stay in my heart and the closest. So when you were here, I felt that you were struggling a lot with confidence. You knew the process, you knew everything, but I felt that there was some problem with confidence. You had fear, like you used to go blank when you used to go to the exam. What was all that? Like, you tell us what was your struggles and how things started. You started feeling them. How you noticed that there is something evidently there, because I remember we had spoken about it. Tell us. Okay, so maybe because I would prepare a lot, but then when you prepare a lot and then there is something that you don't do, and then you just get you focus on something that you don't know, and then you just go haywire and then everything goes amiss. So that was the thing that would happen to me. I would put in a lot of effort, and then if something doesn't happen, that would get on to me, and then you should regret. Yeah. You remember I had told you one time I had studied maths full night, and I failed in that exam. Yeah. So it's when you put over effort, something that is not needed, and you put something little but proper amount, proper time is given. You go to sleep one night before an exam, take proper sleep, healthy eating is done, waking up at proper time, and that helps more than just study. I don't believe in that, because I've already experienced it myself, and you've also experienced it, right? Yeah. I would look after, you would always suggest what you would have. I would always follow your path. Yeah, because I have done so many mistakes, and you know what are the right things to do. Maybe that is the way that I mentor you all. Because I know I learned from my mistakes, and I'm sure you also learned from your mistakes, and that's the reason today you're pursuing engineering, and that also in a very different field, AI. So how is it going? It is good. I mean, artificial intelligence is the future and the present now. Like, there are so many artificial intelligence platforms, like you can do presentations, anything, like handwritten notes also, assignments also you can submit in AI generated, just 5 minutes will take.
Yeah. So AI is like, it has been fascinating me since childhood. Like all these sci-fi, I love sci-fi as a genre. Yes. So sci-fi movies and all. To be honest, I took AI just because उसमें कैसे ऐसे the AI would take over humans and all. Yes. So ऐसे the ones who knew how to handle it, they would survive. So I thought maybe I'll study AI just to kill robots. That's amazing and interesting. Yeah. Coming to Shivang Gole, Shivang, you have always been a naughty one. Yes. Always. So I've known you since your Didi started coming to me. Yeah. You're the little Shivang who used to come here and say Didi, Didi, and still you do that. Yeah. So I am so happy to see you. You have also outperformed your own scores. I think you were your own competition. Yes. Yes. And initially when you started, I remember that sports था, मेरे को बास्केटबॉल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे वो क्लास जाना है, मैं ये बाद में आऊँगा, adjust my timings, do this, do that. So sports has been a really big part in your life. So what lessons did you learn from sports? Like मैं तो बचपन से like from second I am playing जितना sports I can learn. मेन तो बास्केटबॉल था and then I am athlete उसके ऊपर से. तो जितना sports में जा सकता हूँ as to like sports is my first preference पढ़ाई के ऊपर. तो like कुछ भी हो गया पढ़ाई तो मैं कर ही लूँगा. Sports में क्या करूँगा? Then फिर वो सोचने का and sports like I would recommend कि sports is as important as studies also. Yes. क्योंकि जो चीजें पढ़ाई से तुम लोग को नहीं समझेगा वो स्पोर्ट्स से समझने ही वाला तुम लोग को. ऐसे मुझे 3 चीजें बताओ. फर्स्ट थिंग कि व्हेन यू प्ले स्पोर्ट्स तो अभी लाइक जब प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ तो तभी कुछ होता, बट व्हेन यू गो फॉर टूर्नामेंट्स जब बड़े प्लेयर्स आते हैं दे आर मोर लाइक परफेक्ट इन एवरीथिंग. उनको देख के एक तो ऐसा होता है कि वी लूज कैसे हम लोग जीत भी जाते हैं. तो डीमोटिवेशन वगैरह ओवरकम करना भी आ जाता है स्पोर्ट्स से. उसके ऊपर से देन वी लर्न न्यू थिंग्स कि हम हार भी सकते हैं. हाँ. हम वापस हार के भी वापस एक बार गेम खेल सकते हैं. हाँ. वापस जीत सकते हैं. एंड देन फ्रॉम स्पोर्ट्स ये भी होता है कि देयर इज अ टीम. पहले बात तो हु सपोर्ट्स यू. एवरीवन हैज द सेम मेंटालिटी कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वो भी मेरे साथ वही सोच रहा है और सब एक साथ बढ़ते हैं. करेक्ट. टीम में. सो दैट्स व्हाई कि स्पोर्ट्स के साथ साथ लाइक टीम वर्क तो समझ ही जाता है कैसे होता है. देन यू नो हाउ टू ग्रो. डिसिप्लिन होता है कि यू हैव टू प्रैक्टिस दिस. जीतना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कुछ भी. यस. सो यही सब चीजें आई थिंक यू कैन रिलेट इट टू योर एकेडमिक्स एज वेल एंड यू कैन पुट इट इनटू एक्शन व्हेन यू स्टडी. बट व्हेन डिड यू एक्चुअली पुट इट इनटू एक्शन? क्योंकि मुझे लगता है बहुत लेट हो गया था जब तक एक्शन. लाइक मैंने तो सोचा था कि चलो 10th है हो रहा है अच्छे से जा रहा है. 10 दिसंबर तो मैंने सब लाइटली लिया कि चलो हो रहा है. फिर आगे प्रीलिम. और फिर मिल गया रियलिटी चेक कि अरे अभी नहीं होगा. फिर समझा कि अभी वर्क करना पड़ेगा कि इतना तो पढ़ूंगा तो हो जाएगा. ये तो गारंटी. और लाइक अगर अभी पढ़ूंगा तो बाद में आई कैन इवन प्ले स्पोर्ट्स. यस. उसके ऊपर से दे विल बी गिव योरसेल्फ दैट रिवॉर्ड. पढ़ लेता हूं तो फिर मैं बाद में स्पोर्ट्स खेल सकूंगा. राइट. यस. एंड like she had already done a very successful board exam. She had a result and was she a mentor to you, or did she teach you things? How was your house thing? Give us some gossip. ऐसा नहीं कि उसने सिखाया नहीं है कुछ. सिखाया तो मेनली तो आई यूज्ड टू लर्न ओनली कंप्यूटर फ्रॉम हर क्योंकि शी इज एकदम परफेक्ट उसमें. तो चलो कंप्यूटर सीख लेंगे. बट रेस्ट में आई टू नॉट लाइक कि अरे क्यों डिस्टर्ब करना है, मैं खुद से कर लूंगा. हाँ. और दीदी को क्या लगता था? दीदी उसके इसमें बिजी हो रहा है. लाइक टेंशन मत ले मैं सब कर लूंगा. एंड मैं से भी आई डिडंट स्टडी स्टार्टिंग में जाना. जितना भी क्लास में ध्यान देता स्कूल में ध्यान देता था. एग्जाम आ गया पढ़ो जाओ. दैट्स इट. हाँ वो तो तेरा एटीट्यूड था ही हमेशा से. वी नो यू. बट ये तुम लोग ऐसे थे अपोजिट पोल्स हो कि वो पढ़ा ही नहीं सकते थे. मतलब आई वुड ट्राई, ही वुड बी लाइक ठीक आई मैनेज. I would even started teaching and then he was like, I'll manage, chill. So he wanted to do it on his own and he has actually done it on his own by scoring so well. What were your percentage? 95.2. Yes, that's amazing. I think 2% lesser than Kanishka. Oh, yes, and 2%, but I feel that वो 1%
वैल्यू होता It है. is more worth than mine Yes. because he has put in lot of more effort. Yes, definitely. But I feel, Tanishka, even you, right now, because you've accomplished 12th and you've done more efforts, so you must have forgotten. But I remember you used to come here, lockdown tha. I used to be here teaching in this class, and used to go in the class above, sit with your lunch, tiffin, everything you have sorted, and you're writing papers. Yeah. Yeah, so how important it is to write papers or solve them before your exams? Basically paper. Even now when I go for engineering, rather than studying first, I go for the paper first. I just have a look कि what all is there, what all things I have to go for. सब पढ़ने से थोड़ी सब आने वाला है ना. Exactly. सब दिमाग में, छोटा सा दिमाग में सब कितना डालेंगे. Yes. So when you see the paper pattern को जरा analyze करने से you'll get to know कि what all is there. ये सबसे बड़ा मिथ है. Exactly. कि सब लोग को ये लगता है कि तुम पढ़ लो पूरा टेक्स्ट बुक, दिमाग में फिट कर लो एंड देन गो फॉर अ पेपर एंड तुमको आ जाएगा. बट दैट्स नॉट हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स. यू लाइक यू सेड, पहले पेपर को एनालाइज करो. पहले पेपर को देखो क्या आता है, कौन सा क्वेश्चन किधर पूछा है, क्या रिपीटेड है, और उससे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक, सब टॉपिक है, टाइप कौन सा है. ऑल दैट मैटर्स. डिड यू डू दैट, शिवांग? Yes. You did. Like in the so you end. followed her footsteps. Yeah. In the end, okay. In the end, मतलब इसका ऐसा था कि इसको बोलना पड़ता था कि अरे अभी तो ज्यादा कम पढ़ ले, एंड मेरे को बोलना पड़ता है कि पढ़ ले. ये डिफरेंस था. तो ऐसे, एंड उसने जो बोला वो भी करेक्ट है. लाइक पेपर सॉल्व करके जितना समझता है ना उतना पढ़ के तो कभी नहीं समझता. क्योंकि जितना तुम लिखोगे फिर तुम लोग जो गलतियां तुम लोग करोगे ना, फिर गलतियां ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं. इवन ऐसा होता है कि पेपर लिखते हैं, पेपर के बाद हम लोग जब डिस्कस करते हैं दोस्तों के साथ, अरे ये रह गया, अरे ऐसा था, मेरे को क्यों नहीं लगा. फिर जब नेक्स्ट पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग को पढ़ा हुआ नहीं आ जाता है, हम लोग ने डिस्कस क्या हो जाता है. करेक्ट. बहुत ही अच्छी चीज है ये, क्योंकि एवरीवन शुड नो दिस कि हम क्या याद रख सकते हैं. सब कुछ नहीं याद रखते, बट छोटी छोटी चीजें रहते हैं अपने लाइफ में. एंड मोर ओवर इट इज लाइक अ कॉन्वर्सेशन दैट वी रिमेम्बर बेटर देन समवन जस्ट टॉकिंग टू अस, राइट? सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और एक और चीज मेरे को याद आ रही है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कनिष्का के टाइम टेबल का स्टोरी. सो कौन बताएगा वो स्टोरी? कनिष्का. It still haunts me. It still haunts you? Yeah. Still are you going through the timetables? Yeah. The other day he told me, where is the timetable? So long I've been like तभी 10th में पापा ने बोला कि like timetable होना चाहिए 9 hours. ऐसे the worst thing is that the newspaper में जो ऐसे headings आते हैं या फिर relatives के अच्छे percentage आते हैं. Like मेरा academics पहले से अच्छा था, तो ऐसे लोगों का एक्सपेक्टेशंस ऐसे बढ़ रहा था. स्काई रॉकेट हाई था. तो ऐसे वो एक्सपेक्टेशंस है ना, ऑल द pouring me down in the timetable was like 8 hours study per day apart from 4 hours of classes. And पापा ने इतना डिटेल टाइम टेबल बनाया था, हाफ एन आवर भी नहीं छोड़ा था ऐसे टाइम पास के लिए. देन मैम देविका मैम को कॉल करके, मैम ये टाइम टेबल, तो मैम ने ऐसे इजी थोड़ा सा लाइट सा टाइम टेबल बनाया. पापा वुड बी लाइक काय टाइम टेबल बनवलंय तुम्ही, असं सूट एवढी दिली तर अभ्यास कधी करायची. सर तुम्ही काळजी नका करू, एवढं होईल. So but did that the timetable that you took from me, I think we have done it 2-3 times, so did it help you? Like, was it relaxing and you were able to study, or did you study for 9 hours a day? I don't remember कि exactly टाइम टेबल कितना फॉलो किया, but then I'm a night owl, तो mostly दिन में तो मेरा टाइम टेबल कभी ज्यादा फॉलो नहीं होता था. तो रात को सोते वक्त I would be like थोड़ा सा जितना जो पढ़ना है ऐसे पढ़ के I would just sleep, तो वो ना ऐसे दिमाग में रह जाता. So you study at 9 and you study in morning or night? Before the paper. Before the paper, right? That's what we are coming to. So, what is the advice to the people who study just before the paper? What is the right technique to ace it? टेंशन नहीं लेने का. जो हो रहा है जितना, इफ यू हैव ट्रस्ट ना कि हाँ मैंने जितना ध्यान दिया उसमें मेरा हो जाएगा,
ऐसा भी नहीं कि स्टार्टिंग से पढ़ा नहीं, टेंशन देने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ये तेरा एटीट्यूड तो नहीं था। It's like अभी टेंशन ले रहे तो I can't do anything. It's like टेंशन अभी ले रहे तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम it's like ऐसा होता था कि आई नो मैं क्या कर रहा हूँ, तो एंड में मेरे को पता है कि मैं कुछ भी करके जितना टेंशन ले रहे उतना टेंशन नेक्स्ट टाइम ना ले, वैसा तो मैं परफॉर्म तो कर लूंगा। और लाइक एक रात पहले ऐसा लाइक रात के वक्त भी मन नहीं लगता था, कभी मन नहीं लगता था। अच्छा, कभी कभी कि ऐसा लाइक इतना तो आ रहा है मुझे, अभी कल एग्जाम है, कल कर लूंगा। फिर एक्चुअल पढ़ाई तब होता है कि अचानक से एकदम सुबह लाइक 5 o'clock 6 o'clock को उठ जाता था। फिर जो पढ़ाई होता ना सीधा एग्जाम के पहले तक वो तो जो कैसे पढ़ता था, कैसे लोगों ने पढ़ना चाहिए अगर पढ़ाई नहीं हुआ है और एग्जाम आ गई है कल, तो क्या एडवाइस रहेगा, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए? आई वुड से कि जो नोट्स आप लिख रहे हैं, जैसे कि अभी स्कूल में तो टीचर्स जो नोट्स देंगे उसको तो रिवाइज करने को ज्यादा 1 घंटा भी नहीं लगेगा, जस्ट गो थ्रू इट। और ऐसा होता है कि टीचर्स बताए वो कभी कभी एक पर्टिकुलर पार्ट पे ना ज्यादा ये करते हैं प्रश्न इम्पोर्टेंस, तो फिर मैं क्या करता था कि यार उस वक्त ये टीचर ने इस पे इम्पोर्टेंस दिया था, ये मैं अच्छे से करके जाऊंगा कि ये पूछ सकते हैं गारंटी से। तो जो पार्ट आपको लग रहा है कि वो अच्छे से करना चाहिए वो करके जाने का। एंड लाइक स्कूल में तो कितना 20 मार्क्स का यूटी होता था एंड 80 मार्क्स का, ये तो लाइक पेपर पैटर्न तो हर टाइम सेम होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इफ देयर इज लाइक न्यूमेरिकल्स होता था तो फॉर्मूलाज फॉर मैथ्स आई वुडंट से कि फॉर्मूलाज लर्न करके जाओ, बट लाइक फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगर फॉर्मूलाज पता है तो अप्लाई होना इजी है। सो व्हेन यू सेड मैथ्स के लिए फॉर्मूलाज लर्न मत करो तो क्या करें, मतलब इज देयर एनीथिंग एल्स अल्टरनेटिव दैट यू वुड सजेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स? ऑल्टरनेटिव आई एक्सेप्ट मैथ्स, बाकी सबका एक दिन पहले पढ़ाए तो हो सकता है, बट मैथ्स इज अ थिंग कि अभी 10th में एवरीवन नोस कि ट्रिगो आता है एंड ट्रिगो इज लाइक वन ऑफ माय सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा, दुश्मन है तेरा, ट्रिगो इज योर दुश्मन। ओके हां, सो आई वुड से कि फॉर्मूलाज भले ही याद होंगे बट ट्राई टू लाइक ऐसे यूज करना, देखो क्वेश्चंस एप्लीकेशन। हां एज इन अगर ट्रिगो लाइक फॉर एग्जांपल किसी को ट्रिगो नहीं आता है, टेक 10 क्वेश्चंस, नहीं हुआ टीचर को पूछो, जो टीचर सॉल्यूशन देगी वो एक बार वापस से 2-3 बार लिखो, क्योंकि इन 10th आई वुड से कि ट्रिगो क्वेश्चंस ना इधर उधर से सेम ही आते हैं, सिर्फ 1-2 वर्ड बदल के दे देंगे कि ये निकालो वो निकालो ना, सेम ही आएंगे। तो इट विल बी इजी कि तुम लोग को प्रोसेस पता है कैसे निकालना है आंसर, rather than आंसर नो होने से। Yes, I think that's a really good advice. Kanishka, is there any advice for all the students out there? For theory papers, I would suggest rather than learning all the thing again, just go to the paper once and then you'll get to know कि कौन से questions बार बार at least 2-3 पेपर एक दिन पहले या 2-3 घंटे पहले if you'll go ना तो पता चला ये questions बार बार आ रहे हैं। तो when you go to your class with your peers, discuss it with your peers और class room पे बस एक discuss करो, 110% वो question आता ही है theory like history and geography. I would just go through the paper and then ये क्वेश्चन जो लाइक क्वेश्चन आने वाला है, I would just ask my friends इसका आंसर बताओ, तो 2-3 लोग अलग अलग टाइप के आंसर बताएंगे, तो you frame your own answer. कितना टाइम लगेगा, 1 minute per question. तो ऐसे बम्बार्ड नहीं करना है, but just some things that you might feel ये आ सकता है, 5 marks के क्वेश्चन होते थे तो कितना बेनिफिट होता है। Yes, right. And one more thing I wanted to tell is counseling. That we at DKF made sure that consistently we were counseling you all. I think Shivank was going through a little lesser compared to Kanishka. Kanishka, what was the experience here with the counseling part? What did you feel? How did it help you, motivate you? And did it, significantly get any changes in you? Counseling was the best part because you get it is a leisure time that you get out of your busy schedule. I mean, you can talk about your things, like something that is bothering you, something that you want to share with. And Harshita ma'am is such a good person. I still talk to her sometimes. Yes. So it's about talking about your difficulties or hurdles in the preparation, or maybe talking about just what is
not working out for you. And sometimes I feel in the counseling sessions it's you who give out the solutions yourself. Exactly. Yes, did you feel so? Yeah. Yeah. And did you go through any counseling, Shiva? काउंसलिंग मतलब मतलब काउंसलिंग तो हुआ है मेरा, पर ऐसे काउंसलिंग में मेन पॉइंट नहीं, प्रॉब्लम्स तो जाने दो, आते रहते हैं। बात होती थी कि लाइफ कैसा रहना चाहिए, सब ठीक है कि नहीं, लाइक इट वाज लाइक प्रॉब्लम्स सॉल्व तो मैं खुद भी कर लूंगा, बट आई वांट टू बी लाइक उतना जो टाइम में करता था ना, बात हर्षदा मैम हो क्या आप हो, तो उतने टाइम में एक तो मैं सीख सकता हूँ आप लोगों से कुछ, वरना उतना अच्छा टाइम स्पेंड करना। लाइक आई डोंट नो अबाउट गर्ल्स, लाइक मेरी बहन तो बोल देती थी क्या प्रॉब्लम है, बट जितना मैं मिला मेरे लड़के वाले जो लड़के हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, दे आर लाइक अरे होता है, मैं हो जाता है, हो जाएगा। I feel that is there. Gender difference is there. Like boys usually don't share things so easily, and they don't come out and tell their problems. In fact, girls will be like, they'll start with the problems, and then right, this is how it is. But the attitude and like you said, that journey, life अच्छी होनी चाहिए. ये बहुत important है कि life हमारी अच्छी होनी चाहिए. So with that we will conclude this with I'm telling you one thing, I'm always going to be proud of you, and I'm sure that every decision that you take, everything that you do in life, you will always have this impact of DKF, and I am sure that I will have your impact, because it's two ways. Students also impact teachers. I know how I can be with a certain child of like your kind of mentality, your kind of attitude, and both of you all have been so sincere, consistent. I remember we used to shoot videos also, and Shivang used to participate full on. He used to be like, ye angle do, aise karo, waise karo. So all these memories are always going to be in my heart, and I hope that we'll keep meeting. Yes, ma'am. And thank you so much for being here. Thank you so much for having us. Yes.